नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने बेसिक स्ट्रोक्स देखे कैलीग्राफी के। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बेसिक स्ट्रोक्स को ऐड करके हम लेटर्स कैसे फॉर्म करते हैं। ऑल्सो इन द बिगनिंग हमें ऐसे लाइन पेपर्स को प्रेफर करना चाहिए क्योंकि इससे हमारे लेटर्स सही बनते हैं, ऊपर नीचे नहीं भागते हैं। इन अ लाइन इन अ मोर डिसिप्लिन्ड वे। आप एक नॉर्मल प्लेन पेपर लीजिए जिन पे आप इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर लीजिए स्केल से, इक्विडिस्टेंट लाइंस, सो दैट वी कैन प्रैक्टिस मोर इजीली। इस वीडियो में हम ये स्मॉल लेटर्स प्रैक्टिस करेंगे A to J। पेंसिल से प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद ब्रश पेन से प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट लेटर A। A is a combination of oval plus underturn, and combining it we can write as oval, underturn, and this side should be small. B. B can be written as a combination of downstroke and oval but in reverse direction. So downstroke, oval. C is also an oval but just removed from this side. Also D, oval plus downstroke, oval plus downstroke. For E, we move up and then half oval. For F, it is a downstroke. Sorry. Upstroke, downstroke, then again upstroke. And upstroke, downstroke, again an upstroke. Similarly for G, H, I and J, oval, downstroke with a slight bent upstroke, downstroke, overturn, underturn, remove it from this side and put a dot here, downstroke, a slight bent overturn, upstroke and a dot over here. Now we will practice them with brush pen. For brush pens I have this set of brush pens. You can get it online or from your nearby shop, और आप कोई सिंगल ब्लैक पेन भी ले सकते हैं इसकी जगह, ब्लैक ब्रश पेन। ओके, नाउ कीपिंग इन माइंड द कॉम्बिनेशंस वी ट्राइड बिफोर, वी विल नाउ प्रैक्टिस द लेटर्स यूजिंग अ ब्रश पेन. So for beginning we will start with A. As I told, A will be oval, then underturn, half underturn. B, downstroke and the reverse direction oval. C would be oval but reduced from this side in the middle. D would be an oval plus a downstroke. Next E, a little raised upstroke and then half oval. F, upstroke, downstroke, then upstroke. G, it is oval and then a downstroke, a slanted little upstroke. For H, it is downstroke and overturn. For I,
underturn, just a bit underturn, okay, and a dot upon that. For J, downstroke, slight bend, upstroke, and complete it with dot. So in this class we have practiced 10 small case letters, and in the next class we will practice uppercase letters. And now it's your homework कि आप बाकी जो स्मॉल केस लेटर्स हैं वो कंप्लीट करें. इन केस आपको कोई क्वेरी है लेटर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड या जनरल कैलीग्राफी की, तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो. थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल एंड. वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें. एंड कीप फॉलोइंग फॉर मोर सच कंटेंट्स.